हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन दिस video lecture we are going to continue from where we left in the last class. So this is an ongoing series on media literature. We are discussing, learning about important books, authors which are important from examination point of view for mass communication and media studies. So we have up till now gone through a lot of media literature. We have learned about several theories, their authors, and we have in this due course also solved a lot of PYQs. So this lecture will be a continuation from part 3, and this has been really intense. We have been going through a lot of books, their key ideas, why they are important. Okay, volume is little low, I'll fix it. Thank you Bidhan for letting me know. So if I'm audible, there is no technical glitch. Bidhan is saying audio is less, but Bidhan, see, the decibels are fine, and today there are a lot of technical glitches. Let me fix them first one by one. So medium is the message, as McLuhan says. Okay, all good. So in this video lecture we are going to take this forward. If you are somebody who is new to my channel, my name is Tushar Goyal. I'm a PhD research scholar at Center for Media Studies, JNU. I've qualified several media exams. On our channel you will find more than 200 lectures which are absolutely free, open access. So if you are somebody who is preparing for media exams, any kind of media exam, you can consider subscribing to our channel. Go through our playlist, you will find very in-depth playlists. Okay, and if you wish, you can also avail our test series. The links will be in the description box. There is also a telegram group for all the updates. You can check the description box. So till in the last class we learned till here. Okay, imagined communities. So we have with us a lot of people. Happy to see you all at this last late hour, but my schedule is also little busy because I am in an advanced stage of my PhD. But I so happy to see all all of you like at this late hour. So let us begin. आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे अभी, ठीक है? So dear students, first of all we have to be very patient. मैंने आपको बोला है ना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है. अभी आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आप लोग जाओ चैट जीपीटी पे और ये आपको दुनिया भर की हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, ठीक है? यूट्यूब पे भी मिल जाएगा. अभी टाइम इसलिए इतना लग रहा है क्योंकि ये कुछ यूट्यूब पे है नहीं. हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 15 साल के PYQs को देखा है, ठीक है? ओके, अंश इज सेइंग सर आप जब बोलेंगे हम तब आ जाएंगे. सो स्वीट. सो थिंग इज दैट वी हैव गॉन थ्रू लास्ट 15 year PYQs and we are trying to create sense out of what has been asked. Okay, this is an entire ocean and what we can learn is just a drop of it. Okay, so that's why it is taking a lot of time. Okay, in this entire journey you are learning about a lot of new concepts which are very relevant, very important from examination point of view also. Okay, और वो टेबल बनाना होता तो मेरे लिए सबसे ईजी होता, जल्दी से बना के छुट्टी हो जाती. ठीक है, इतना सारा करना पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है ना करने में, मुझे भी मज़ा आ रहा है, चाहे मेहनत हो रही है मज़ा आ रहा है. इसको हम ऐसे ही एकदम अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को. ठीक है, आप लोगों के लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ. सो लास्ट क्लास में एक किताब मिस हो गई थी, हमने इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ तक पहुँच गए थे, ओरिएंटलिज्म. ठीक है, a very important work in context of cultural studies, media studies, okay, history, a lot of, if you want to look at it from the perspective of post-colonial studies. So a landmark, seminal work, a groundbreaking work. Okay, and it actually coined this term Orientalism. So Orientalism itself has become a separate field of study. So it was by Edward Said. Okay, Said's groundbreaking work examines how Western scholarship and media have historically portrayed Eastern society, especially African societies, in a stereotyped and patronizing manner, thereby justifying imperial and colonial policies. Now let us discuss about this profound concept with some relevant examples. So the idea that Western societies, they are civilized, and these Eastern countries, they are
savage, or let's say जब इंडिया का नाम होता है we are the land of snake charmers, है ना, snake charmers. So Edward Said suggests that all these books, arts, artifacts of media, they have a certain way, okay, to look at things, how they are being portrayed. It is full of framing, full of stereotypes, full of preconceived notions, okay, full of bias. Look at certain tiles. So if let's say look at this painting first of all. What so you will see that snake charmers, people are savages, a certain way of treating women, okay, their occupations, and then how they look, how they live, how they dress. It is all filled with certain stereotypes, how West looks at Eastern countries. So this was the basic premise of this book. And in Said's analysis, the West essentializes these societies as static, underdeveloped, thereby fabricating a view of Oriental culture. So he suggests that the Western societies, the way they look at the Eastern countries, okay, it is filled with bias, or let's say stereotypes, okay, that the West is civilized and this these Eastern countries, these people are savages, they need to be civilized by West. So this this bias or this complex that the Western societies are more developed than Eastern societies. So this was the idea of Orientalism. सर अब हमारा क्या लेना देना, आप हमको पढ़ा रहे हो, कोई मतलब बनता है? मतलब बनता है क्योंकि देखो कुछ 6-7 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछा था, ठीक है. Whatever we are doing, I'll keep reiterating it, it's all exam oriented. There might be a case that they might ask you some new books, but if you know what have been asked, you can always do elimination. So who is the originator of theory of Orientalism? They once even asked who is the author of the book Orientalism. So remember this, Edward Said. Now all these options also becomes very important. Noam Chomsky, he is a very important person from examination point of view. Acha, who was this person? Can anybody tell me? Donald Shaw, which theory, which book he was related to? Now you should start start creating threads out of it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, ये मैं एक PDF अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, बड़ी कलरफुल बनाई है जिससे आप लोगों को पढ़ने में मजा आए. ठीक है, I'll upload it in the test series, both of those. चलिए आगे बढ़ते हैं. Then next very important book is The Third Wave by Alvin Toffler. Now you will find that the phenomena of information society. Okay, good, Tane. What about others? Can anybody tell me the book he wrote? So he was one of the co-authors. Okay, so 1980, the third wave. So if you look at the history of information and communication technologies, you will find that there was a progression in 1980s. So now they were being democratized in a way that the normal, or let's say the coming up of desktop computers, people could own a computer. Initially, let's say in 1950s or 1960s, there were only mainframe computers or supercomputers, which could only be owned by universities or institutions. But with the coming up of, let's say, desktop computers, lightweight computers, they were being more democratized, especially, let's say, in workplaces. Offices could afford computers. Okay, during this time you will find a lot of authors, they are looking at transition of society. Okay, so one of this seminal work was Third Wave by Alvin Toffler. Now when we are discussing about one work, you have to search about this person, go and look at it, his other works as well. ठीक है, इस तरह से तो नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, हजारों किताबें कैसे करेंगे. ठीक है, very good, तने मनमोहन. So that's how you should learn. They how like these guys could relate with other option. Donald Shaw, they are writing agenda setting. Good. ठीक है, how to remember it? The best way to remember it, that you have to solve, you have to do a lot of riyaz, you have to keep solving a lot of questions. Manmohan and Tane, they are always live, I see on application, they are solving 200 questions every day. Okay,
no, so yeah, we will come to that industry 5.0, just wait. So here the third wave, this book suggests that the third world countries, okay, जो अमीर countries थे वो तो पहले transition हो गए थे. So a transition from industrial society, so a society in which the like the major focus is on the production of goods and services through industrial setup, ठीक है, from industrial society to information society, where the production, consumption, distribution and dissemination of information takes center stage. Now in which, you know, this is also an information society. Okay, so the third wave, it was a book, it came in 1980 by Alvin Toffler. It is a sequel to Future Shock. Okay, so he was a prophetic guy. Okay, सर मैंने आपका यूनिट 10 नहीं किया, बाकी सब कर लिया है. ओके, अगर CUET PG वाले हो तो यूनिट 10 करना नहीं है. यार ये चीज़ बहुत गलत है जो आप लोग मुझसे पूछते हो ना, सर इनफ है, इनफ है. नथिंग इज इनफ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना. यू हैव टू कीप लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. नथिंग इज इनफ. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर हो जाएगा, इनफ है, इनफ है. बेटे इनफ कुछ भी नहीं है. यू हैव टू कीप फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ. सो सम ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर तो पेपर बता देंगे हमको कि ये आएगा एग्जाम में. आई कैन जस्ट टीच यू, आई कैन शो यू अ गुड डायरेक्शन कि भाई आप इन चीज़ों को पढ़ो. वॉट एवर वी आर डूइंग, इट इज़ ऑल PYQ बेस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड. ओके, नथिंग इज इनफ. आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू कीप फाइंडिंग, यू हैव टू कीप डिगिंग स्टफ, यू हैव टू कीप नॉकिंग द डोर्स टिल द लास्ट ब्रेथ. ओके, यही एग्जाम है. आई कीप टेलिंग UGC नेट स्टूडेंट्स एज वेल, नथिंग इज इनफ. यू हैव टू कीप सॉल्विंग थिंग्स. ओके, सो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो. आपको सिलेबस पता है, आपने पिछले 2 क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, आपको पता है व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इज बीइंग आस्क्ड. ओके, सो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. अच्छा, अब सर आप कह रहे हो, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो एल्विन टॉफलर की थर्ड वेव? ओके, देखो बेटा, इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपका ही पेपर है CUET PG वालों का. एल्विन टॉफलर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पहली बात ये, ठीक है. तो मैं जो आपको करा रहा हूँ, इट्स ऑल एग्जाम ओरिएंटेड, बट यू लाइक don't expect anybody, it's all marketing gimmicks. if somebody is telling you कि आप मेरा कोर्स ले लो और enough हो जाएगा, बेटे enough कुछ भी नहीं होता कभी भी, to be very honest. ठीक है, I'll be very honest. You can ask UGC net students also. Sometimes I might sound rude, but it's always for your good. ठीक है, because I don't expect anything, to be very honest. I am on YouTube, I'm not on my application. It's open access for everybody. So I keep telling you, if somebody is telling you that आप ये कर लो और ये enough है, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए. ठीक है, आपको खुद बार बार पढ़ते रहना है. ठीक है, तो एल्विन टॉफलर की जो किताब है थर्ड वेव, इट सजेस्ट दैट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव ऑल्सो like shifted from industrial societies to information societies. ठीक है, so the third wave is a post industrial society. post industrial, so किसी भी चीज़ के आगे पोस्ट लग जाता है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, पोस्ट ह्यूमैनिज्म, these are all philosophies, these are all historical concepts. So something which is after this particular event. ठीक है, so post industrial society, Toffler suggests that since the late 50s most countries have been transforming from a second wave was industrial society into a third wave society. He coined many terms invented by others such as information age. ठीक है, so this information age का मतलब क्या है हम समझते हैं. ठीक है, तो यस, सो शोभना समझ रही है इस बात को. सर मैं आपके एप्लीकेशन का जितना कंटेंट है वही सबके. गुड रोहित, और भी करो, मैं कह रहा हूँ करते रहो. ठीक है, मैं आपको अच्छा एक तरीका बताता हूँ. कुछ बच्चे कंफ्यूज है, पढ़ना किस तरह होता है. ठीक है, पढ़ना होता है कि हमें ना एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. देयर शुड बी अ डायरेक्शन. ठीक है, अगर कुछ भी खाते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो हमने एक आप लोगों के लिए बहुत सिंपल वीडियो बनाई थी, स्ट्रैटेजी टू फॉर CUQP17 ऑल्सो. UGC नेट के बारे में बार बार कहता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मेक PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, योर रोड मैप. ठीक है, अगर आप लोग कर लिया है, क्या करें. अच्छा, so yeah, Kanishka has which you were telling me na, you took any CUT Baba course. Good. So don't write those things here. It's not good, if you are saying that मैंने किसी और का कर लिया, अच्छा नहीं. No, we shouldn't be saying this kind of things. Whatever you have, you should study from that only. ठीक है, or let's say look for better things, but we shouldn't cry later. So thing is that make previous year question papers your Bible. ठीक है, find other question papers.
then see what kind of patterns are being repeated. Okay, you see that every year I can see that fundamental rights is being asked again and again. Okay, then they you can see that other question they're asking you about awards, Oscars. So just go and learn about all those things. You see that okay, a lot of media literature is being asked. Okay, 5 questions last year and 6 questions the previous year. So let me go through all the media literature. Okay, they are asking questions from camera, so let me learn about camera and functions very properly. Okay, I'll solve a lot of questions. This is the right way. Okay, so Manmohan is saying he's understanding, but okay, Kanishka, don't worry, like if you have taken some course, it's not worth for you. Still there, कोई भी फिल्म ना कभी भी 100% बुरी नहीं होती. ठीक है, जो आपने कोर्स परचेज करा है उसके ज़रूर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, आप उसको लो. ठीक है, फील मोटिवेटेड, फील हैप्पी. जो आप सीख रहे हो उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, पार्लियामेंट इज बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन, सो लर्न अबाउट पार्लियामेंट. ठीक है, लर्न अबाउट रेडियो के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो. सो मेक सर्टेन PYQs बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दे आर सीट बेल्ट. अभी हम जो कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं ना, बार बार रिपीटेशन दिख रहे हैं. सो देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन ओनली वन बुक, एल्विन टॉफलर्स थर्ड वेव. This is from media literature, which is related to media studies. All of the other books, these are, what are they? They are novels. ठीक है, so they are not media literature. It's a part of general awareness. ठीक है, 6 questions from yes. So on our application for CUET PG students, on Monday there will be another test live, which will be fundamental rights. ठीक है, all the questions which have been asked in other exams, we have collected it. It will be live. And today after 10 o'clock this मीडिया लिटरेचर टेस्ट विल बी ऑल्सो लाइव. सो इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मीडिया लिटरेचर से है. अगर आपको एक भी आता है ना, जैसे इफ़ यू मैच ए विथ 3, यू कैन एलिमिनेट अदर ऑप्शंस, यू गेट बेटर चांस ऑफ सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस. ठीक है सर, आपके टेस्ट सीरीज देखो, कोई पेड कोर्स नहीं, इट्स अ टेस्ट सीरीज. ठीक है, आर कोर्स इज हेयर ऑन यूट्यूब में सब PYQ, यस हमारा सारा ही PYQ होता है. ठीक है, चलिए, एल्विन टॉफलर का एक थर्ड वेव है. ठीक है, इट विल बी मैच्ड विद फर्स्ट. यस, एलिमिनेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक वी डिस्कस्ड अबाउट इट, इमेजिन कम्युनिटीज. देखो कितना ही खूबसूरत थॉट है. हमें तो मैच द फॉलोइंग थोड़ी ना करना है. क्या कहना चाहते हैं, इमेजिन कम्युनिटीज. बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रिंट कैपिटलिज्म, कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अ बाउंड्री और लेट्स से अ कंट्री, इट इज लाइक हाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड. मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था ना कि यू ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट हैव यू एवर लाइक जो बाउंड्री है पूरी इंडिया की, ठीक है, जो आपने मैप देखा है, क्या कोई बच्चा पूरी बाउंड्री के थ्रू मतलब गया है? या आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे स्टेट्स में, सारे जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स को विजिट कर चुका है, सारी तरह के लोगों से मिल चुका है, बट इट इज़ अ इमेजिन्ड कम्युनिटी. ठीक है, इट इज़ थ्रू when Benedict Anderson wrote this book, his major focus was on newspapers. Okay, how like vernacular newspapers, these newspaper owners, okay, they used the print capitalism to create communities. So Anderson introduces the idea that nations are imagined constructs. Okay, let's say if you don't have news, India Today, Aaj Tak, or let's say if you don't have Indian Express, can you think about this concept of a country where you have never visited all the states? Okay, you might have visited few states, okay, but this entire idea of country, okay, nationalism, okay, it is constituted through newspapers, through news. Okay, then a small request, please don't digress. Whatever we are learning, focus on it. So if I keep answering all these questions कि sir current affair कहाँ से करें, then how are we going to focus on this thing? Please, when we are in live lectures, kindly have some scholarly conduct. Okay, so next, so this book is also very important. Why? Because they asked the PYQ just 20 days ago. 20 नहीं, अब ज़्यादा टाइम हो गया, 27 को हुआ था ना, हाँ, तो 20-25 दिन पहले ही क्वेश्चन आया था. इसका सब बच्चे जवाब देंगे. ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, काइंडली बी पार्टिसिपेट, लाइक ऐड योर रिफ्लेक्शंस
एक तो सब मुझे एक बच्चे जल्दी से ना थोड़ा सा इसको हैप्पी मूड करते हैं, सारे बच्चे स्माइलीज दो और मुझे अपनी अटेंडेंस दो, ठीक है। बताओ सब काम वाम सही चल रहा है आप लोगों का? खुश हो ना आप लोग? इतनी रात को आए हो तो ज़रूर कुछ सीखने आए होगे। ओके गुड, वेरी गुड साक्षी। चलो अब ये कौन है? ये अल्थूजियर है, ठीक है। ये बॉड्रिलार्ड, इनका नाम था जी जॉ बॉड्रिला। इनके बारे में हमने एक किताब के बारे में डिस्कशन किया था। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए, जल्दी बताइए। देखो इस तरह से तो आप लोगों को लर्न होगी चीज़ें। ये थियोडोर अडोर्नो है, तो इन सब के बारे में हम कभी ना कभी तो बात कर चुके हैं, खासकर यूजीसी नेट वालों से। चलो जॉ बॉड्रिला की किताब का नाम बताओ। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड तने, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड मनमोहन, अंकित, भुवन भी है, चलो रोहित, आयुष, दो आयुष, ओके गुड, ठीक है। सो जॉ बॉड्रिला की एक किताब थी सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन। भूल गए बच्चों? लास्ट क्लास में तो बात गए थे, ठीक है। जीत जाएंगे हम आपकी गाइडेंस में, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड तने, ठीक है। सो इस तरह से तो आपको लर्न करना है कि सारी चीज़ें देखो दूसरे ऑप्शन से हैं, वो भी तो हम बात कर चुके हैं इतनी बारी। अल्थुजियर ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ग्रामशी ने भी दिया था वो। थियोडोर अडोर्नो ने कल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसके बारे में हम क्रिटिकल थ्योरीज में भी बात कर चुके हैं। सो आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। वेरी गुड। सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन एक किताब के बारे में हमने बात की थी, और अभी अगर है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन, जॉ बॉड्रिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So whatever we are doing, it's all exam oriented. Already a lot of questions have been asked and there will be cases. Let's say इस वाली क्वेश्चन में आपको इन तीनों किताब के बारे में नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपको एक दो भी आते हैं ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब इस दुनिया में तो हज़ारों लाखों किताबें होंगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। Then 1985, another very important book which was Amusing Ourselves to Death by Neil Postman. So Neil Postman, this पहले तो ना इस किताब का पोस्टर देखो, ठीक है। इनका मानना है कि जो टेलीविज़न है ना, इसने सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा आपके लीजिए दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव टेलीविज़न की वजह से आया है, ठीक है। इट इज़ शेपिंग पब्लिक डिस्कोर्सेस। सो टेलीविज़न इज़ वेरी you can say it has a very profound impact on the consciousness of people, and it undermines or let's say it ignores important issues, especially with the rise of cable television or let's say satellite television and television like channel, when all these private channels started broadcasting news. So the fight was about the breaking news or who can get the biggest TRPs. So in this, it undermines the basic function of press in a democracy. What is the function of press in a democracy? It should act as the fourth estate, okay, and it should have that social responsibility. हम normative theories में बात कर रहे थे ना, but because of coming up of all these private news channels, so Amusing Ourselves to Death by Neil Postman, multiple times they have asked this question, ठीक है। So Postman critiques the dominance of television in shaping public discourse, arguing that medium's emphasis on entertainment undermines serious public engagement and civic engagement, ठीक है। Then another very important book, Risk Society Towards a New Modernity. So if I ask you what is modernity, let me ask all of you, what is modernity? इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूछा गया है। ये आपको ना पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मिल जाएंगे, थ्योरीज मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिलेगा, इसके बाद बहुत मिल जाएगा, दोबारा लोग बनाएंगे इसको देख देख के, ठीक है। सो इट्स समथिंग वी आर क्यूरेटिंग थ्रू ऑल द PYQs। देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था रिस्क सोसाइटी से, एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है यूजीसी नेट में और रिसेंटली पूछा है, ठीक है। सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड इन द
let's say imagination of the examiner. Era of modernization. Okay, then let me ask, what is era of modernization? What is modernization? What is modern? Have you ever thought about this phenomena? What is modernization? What is modern? So what is modern? Think about it. ये आपसे पूछ रहे थे, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन. सो इनमें से कौन सी किताब आपने पढ़ी है? अपनी ये किताब ऑलरेडी देख चुके हो. सिमिल और ये गलत, इन बहुत गुस्सा आता है मुझे. देखो, ये था सिमुलेशन, सिमिलैक्रा एंड सिमुलेशन बाय जॉब बॉर्डेला. ये यूजीसी नेट वालों ने लिख दिया सिमुलेटर. मतलब जो मेन कोर था, मतलब वही इन्होंने ख़राब कर दिया. ठीक है, इसका ईयर बताओ. अभी हमने इसके बारे में बात की थी, 70s में आई थी किताब. जल्दी बताओ. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. नेटवर्क सोसाइटी बाय मूसल कासल नहीं था, ये मैनुअल कासल था. अभी ये एग्जाम वालों ने ही स्पेलिंग मिस्टेक करी थी. ठीक है, मेकिंग सेंस ऑफ एआई, दिस वाज रिसेंट, 2020 के बाद आई थी, आई गेस 21 में. ठीक है, सो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन. ओके, era of modern advancement in technology, lifestyle. Okay, very good. So what is the antonym of modernity? Like something is modernity na, there is always dichotomy. So let's say we have black and white. Okay, we have day and night. So what is the antonym, or let's say what is the opposite of modernity? I am taking you to a very important question. Okay, so this is a very small homework. We are going to discuss about this in detail because a lot of books are talking about the idea of modernity. So you have to go on internet, or let's say just go through Wikipedia. ठीक है, modernity of thoughts, modernity in the lifestyle. Very good, you guys are coming there. ठीक है, देखो इसको हम कहते हैं थिंकिंग जर्नलिस्ट और थिंकिंग स्कॉलर्स. जो लोग सोचते हैं, ठीक है, जो सिर्फ रट्टेबाजी नहीं कर लेते कि इस किताब ने इसने दिया था और 1986 में किया था. सुबह चार्ट खोलते हैं, रट्टा मारते हैं, कल चार्ट खोलते हैं, रट्टा मारते हैं. ठीक है, उससे क्या फ़ायदा है? तो आज आप लोग जाएंगे. ओके, वेरी गुड सुमेधा. ट्रेडिशनल, ठीक है, देयर कैन बी अदर. ओके, एंटिक्विटी, ट्रेडिशनल विल बी मोर क्लोजर. Very good. So see, you guys know a lot of things, but you need to frame it better. ठीक है, okay. मनमोहन in the last class said you practice. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. So आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ. आप में से सिर्फ 2-3 ही लोग करेंगे, मुझे पता है. But whosoever is going to come up with the best, I am going to reply to everybody. ठीक है, who is going to tell me in just 3 to 4 lines what is modernity. ठीक है, so risk society towards a new modernity. This book, so written by Ulrich Beck. ठीक है, he suggests that the times like they were living in 1980s. ठीक है, it was filled with a lot of uncertainty, disasters, or let's say इकोनॉमिक स्लो डाउन्स, इकोनॉमिक डिजास्टर्स. अभी भी एक आप देखोगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में, अगर आप इकोनॉमिक बेस्ड न्यूज़ पढ़ते हो, सो देयर इज़ अ स्टॉक मार्केट क्रैश. ठीक है, सो ही डिस्कसेस हाउ मॉडर्न सोसाइटीज आर इंक्रीजिंगली preoccupied with managing and mitigating risk based on technological hazards to environmental crisis, transforming social lives. ठीक है, so it is filled with, okay, a lot of better than modernity. Okay, a lot of uncertainties, risks. Okay, चलिए, this was 1986. अभी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. इससे एक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन सब के ईयर मैंने ऑलरेडी लिख दिए यहाँ पे. ठीक है, then amusing ourselves to death by Neil Postman. This question has been repeated multiple times. ठीक है, it has been asked in UGC net, KSET, then all these set exams, Karnataka set, Maharashtra set, WB set. So the basic idea that television as a source of entertainment, news or anything, okay, it has actually made the important discourse, or let's say important things which should be talked about, very trivial. So it is making trivial things more important, and you will resonate with this phenomena in this day and age as well. Okay, so Neil Postman argues that television and entertainment driven media have degraded public discourse, turning news, politics, okay,
and education in superficial spectacles. So we also discussed about the idea of spectacle. Now you have to tell me who wrote the Society of Spectacle. This is CUET 2024 PYQ as well, and we have discussed about this in the last class. Okay, so the idea of spectacle, Guy Debord talks about it. Okay, that this entire idea of media, mass media, especially entertainment, marketing, advertising, it is more of a creation of a spectacle. Let's say what is spectacle which is not real. Okay, yes, very good, Tane. So see how this guy is making, like connecting threads. It is very important to connect threads. Everything is related to each other. It's all storytelling, believe me guys. Okay, if you can understand this theory, you won't be facing any problem. So Guy Debord was talking about it, the Society of Spectacle. So society has been taken over by mass media, and it's all about spectacle. You look at all these advertisements. Okay, so एक क्या है, चीनी तो है कोल्ड ड्रिंक में, क्या है, थम्स अप देखते हो आप, ठीक है, थम्स अप में क्या है, भर भर के फ्लेवर है, आज कुछ तूफानी करते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ इट. ठीक है. सो और लेट्स से देर इज़ अ सिंपल टूथपेस्ट, लाइक कलर है उसके अंदर, उसको उतना ज़्यादा पास आओ, ठीक है, मेरी सांसों में समा, वो कौन सा गाना था ना, कोलगेट का था या जिसका भी था. सो दे आर क्रिएटिंग, what are they talking about? They are talking about the Society of Spectacle. ठीक है. He is also taking us there only. Neil Postman, amusing ourselves to death. So mindless entertainment. You open television, all those debates, television debates, which are not making any sense. Okay. So now if you look at this work, like you need not remember everything. ठीक है. You need not, आप कभी इतनी सारी किताबें पढ़ ही नहीं सकते. आप मुझसे पूछो कि मैंने खुद नहीं पढ़ी किताबें, ठीक है, बट वी कैन जस्ट नो अबाउट देम. वी कैन रीड द फर्स्ट पेज, वी कैन गो थ्रू देयर कंटेंट्स, वी कैन लर्न अबाउट द बेसिक आइडियाज, सेंट्रल की आइडियाज ऑफ दिस मीडिया लिटरेचर. ओके, दैट्स हाउ यू क्रिएट स्कॉलरली कंडक्ट विद इन योर सेल्फ. ठीक है, दैट्स हाउ यू इनकलकेट दिस. आई कीप reiterating about this thing ना, to create a scholarly conduct where you just not cramming up things but going deep into things. ठीक है, and then you will start enjoying this thing. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Then another very important scholar, John Fiske. So there is an entire video which is related to pop culture. ठीक है, he wrote actually 7-8 books. So these are few books which have been continuously, you will see a lot of questions in the form of chronology, in the form of basic ideas, who wrote this book, match the following, इस तरह से. पर इनकी 4-5 किताबें और थी. So there is a very important book in communication studies which is not important for CUET PG students, but UGC net students should at least read 2-3 chapters if you want to read about semiotics, which is Introduction to Communication Studies by John Fiske, and it is a seminal work. It's a work of art in media studies. ठीक है. So the basic idea to look at pop culture, ठीक है, just merely not as an entertainment artifact. Let's say you are watching a music video, you are watching television. So there was a separate field of study in media studies which was television studies, looking at television. Okay, deconstructing it, like जो हम postmortem करते हैं ना, उसी तरह से looking at deep layers, उसकी परतें खोलना टेलीविजन की. टेलीविजन इज नॉट जस्ट मेयर एंटरटेनमेंट मीडियम, इट्स वेरी आइडियोलॉजिकल, इट इज़ टू इंटीमेट, इट इज़ इन योर बेडरूम. ठीक है, समथिंग विच इज़ इन योर बेडरूम, सो इट इज़ इन योर इंटीमेट स्पेस. लेट्स से इफ ऑल दोज के सीरियल्स, ठीक है, so there was a separate new genre of serials, Balaji or let's say Ekta Kapoor serials. All those serials, K series, they used to call them K series, and there have been a lot of research conducted on it. Okay, like all those standardized product, you will find similar storylines. Okay, they were very popular. Let's say I am also working on 2 books. Okay, good. So they were very popular, these serials. They were not mere entertainment. Okay, when we watch something now, we start to identify ourselves with the subject. Let's say all those bahus, or let's say the central characters, those female characters, they had certain ideological values, let's say, which were being transmitted to the audience.
their occupations. Okay, they were always shown doing certain homely chores. Okay, या तो खाना बनाते ही देखेंगे, like all the trivial things they used to show. And these serials ran for, let's say, 10 years, 15 years. Okay, certain serials ran till 12 years as well. Okay, if you look at in West, several television sitcoms, their idea of family values. Okay, the idea of very traditional family values. Always traditional is not bad, but sometimes it should be looked from a lens of criticism as well. Let's say the traditional family values has a lot of things which are not much talked about. Let's say the role of gender. Okay, that a particular gender is supposed to do certain things and other particular gender is supposed to do this thing only. Okay, and when you do these things, or let's say when you create dichotomy, it starts to become normal. ठीक है, the idea that it is normal, ऐसे ही तो होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है. So that's how television works. So his that influential television culture by John Fiske, reading the popular, understanding popular culture. ठीक है, Power Plays, another very important book. John Fiske is very important, my dear students. A lot of questions have been asked. ठीक है, so another separate, let's say, there is a thing called cultural studies. He is a very big name in cultural studies as well. ठीक है, then रीडिंग द पॉपुलर, ये हम बात कर चुके हैं. ठीक है, इसको और स्ट्रेच नहीं करूँगा. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट टेस्ट एज वेल. देन नॉम चॉम्स्की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और इन्होंने कुछ 15-16 किताबें लिखी हुई हैं. ठीक है, रिसेंट एक 2021 में आई थी, ही इज़ नो मोर आई गेस. सो नॉम चॉम्स्की की जो किताब थी हु ओन्स मीडिया और उस तरह से कुछ था, तो इनकी पूरी बिब्लियोग्राफी आप जाएंगे देखेंगे, उसको एक कॉपी पे नोट करेंगे. ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनसे देखो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट. अच्छा बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट कौन सी किताब से लिया गया है और किस महान व्यक्ति ने इस कॉन्सेप्ट की रचना की थी? आप बताइए, हमने लास्ट क्लास में बात की थी. आप इस तरह से आपको कनेक्ट कर रहा है. देखिए, कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे. जो बता पा रहे हैं वो किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट हैज़ बीन इंस्पायर्ड. सो नॉम चॉम्स्की takes this, okay, or he was inspired by another book in media literature. It was, which book was it? Manufacturing consent. We categorically talked about it in the very first class. It was in 1920s. अब बताओ. Okay, then you have to find it on your own. I won't do the spoon feeding. Okay, you have to go and find like which book propounded this phenomena of manufacturing consent. Okay, you are close, but tell me the exact name. Okay, so in this particular book, he actually studies deeply the biggest media houses of United States, like Washington Post. Okay, I have read it but not coming. Okay, no worries, you have to find it then. Then he says that there are 5 filters how propaganda works. So book by Edward S. Herman and Noam Chomsky, it argues that mass communication media of USA are effective and powerful ideological institutions. So they are ideological institutions that carry supportive system supportive propaganda function. So how does this work? He talks about 5 filters. ठीक है, पहला ownership. Who owns the media? The political economy of media. ठीक है, so as the name suggests ना, political economy of media. What is political economy? So the relationship between the politics and economics. मैं थोड़ा simplify करूँ. So the person who owns the media also decides the politics. Okay, let's say no, all the names are wrong. ठीक है, जो दूसरे बच्चे हैं इसको अरे वेट कर लो, घर जाके एक बार पढ़ लेना, गूगल पे लिख लेना कौन सी किताब में दिया गया था, मिल जाएगा सब. ठीक है, परेशान मत हो, कुछ चीज़ें ढूंढनी होती है. थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि अंदर उसको एकदम ठेठ भाषा में कहते हैं ना, अंदर चुल पैदा करनी होती है कि भाई हम जाएँ, चेक करें, चीज़ें पढ़ें. ठीक है, ऐसे नहीं कि सर प्रसाद दे दें, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए. नहीं, पढ़ो जाके. ठीक है, मैंने आपको हिंट दिए, 1920s में था, प्रोपेगेंडा स्टडीज़ के दौरान एक किताब थी. ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट था मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट का. ठीक है, सो
who owns the media? Let's say politics, ठीक है. Let's go back to normative theories. Politics and economy are dependent. Yes, so I'm giving a straight very relevant example. Normative theory, ठीक है. In an authoritarian setup, you remember na normative theories, which year? 1956. Three people gave it, ठीक है. So authoritarian media, like let's say a country like China, so the media is only owned by state, so it will only have certain kinds of stories. It will not never criticize government, ठीक है. Let's say who owns the media? If let's say it's a libertarian society where there can be private ownership, people can buy their estates in media, they can start private ownership, then what kind of media is going to be there, ठीक है. So 5 filters. Ownership, if only few powerful people they own this media, ठीक है. Let's say in Indian context, let's say only the few big conglomerates or the richest Indians. That's how it works in all the media, ठीक है. Who owns our media? This is a very relevant question which you all should ask. Who owns your media? The media you are watching, the media you are reading, who owns it, ठीक है. So in media ownership as well, when we talk about conglomerates, okay, when we रोहित व्हाट शुड आई रिप्लाई? सी आपने मेरा फ्लो रोक दिया, अब मैं क्या रिप्लाई करूं बताइए आपका. मैं इसको छोड़ के मैं आपकी बातों का रिप्लाई करूं? आप क्या पूछ रहे हैं मुझे बताइए. लेट मी वेट फॉर एवरीबडी, देन ओके आस्क योर क्वेश्चन. Sir, I am relying on your test series and mock. I hope, yeah, it should be sufficient. You are solving 30 full length test, ठीक है. You are solving 30-40 important topic tests. It should be sufficient. What should I say? Like, but you should keep working on it. Learn about more things, ठीक है. Keep solving things. ये तो मैंने आपका रिप्लाई कर दिया था. But please be mature, Rohit. You have been doing this since a lot of time. You know, since last 1 hour. You broke my flow, yaar. It's not easy. You know, I don't have any audience in front of me, so I have to keep a focus ना. पूछो आप क्या पूछना है, मैंने आपके लिए रोक दिया पूरा. बोलो आप. Okay, so let's come back. Who owns the media is a very pertinent question which everybody should ask, ठीक है. So that's how it works in India as well. Conglomerates, the idea of conglomerates, if you go through our lecture on media ownership, ठीक है, the idea of horizontal integration, vertical integration, they all will fall in line, ठीक है. So who owns the media? Let's say if NDTV is owned by a certain person, so is NDTV going to run a news which is against the interest of the person who owns it? Or let's say Network 18, it is owned by Reliance, okay, Ambani, Mukesh Ambani. So if let's say there is a news which is against the interest of a particular let's say conglomerate, is it going to run it? Okay, it might not, ठीक है. Let's say a public broadcaster, is a public broadcaster going to run a news against the interest of government? It might not, ठीक है. Then is advertisers. So who is advertising, who is pumping the money? Okay, so this works as a, you know, very potent tool, the government advertisings, ठीक है. So let's say certain newspapers, if they it's this phenomena is relevant around the globe, ठीक है. You will find that let's say if a government wants to curb freedom of speech and expression of a certain media house, they will not give them advertisements, ठीक है. सो ये बहुत बारी देखा गया है. पूरे आप देखेंगे ना, पूरे वर्ल्ड में ये फिनोमेना है, ठीक है. दो दे स्टडीड द ओनली US मीडिया हाउसेस, बट दिस इज ऑल परवेसिव. सो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, हाउ कंसेंट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है. यू आर गिविंग कंसेंट बट यू डोंट नो दैट यू हैव बीन मैनिपुलेटेड, ठीक है. So advertisers, it will favor the owner. Yes, okay, no worries Rohit, don't be sorry, I'm just letting you know that it's not a very easy thing, ठीक है. So it's for everybody. So if you have any questions, keep them
till the end so that the flow doesn't break. ठीक है. Then official sources, what is like, you will see people in news channels, a lot of debates. There will be credible sources or people who will be specialists of this thing. So certain times you will find that a similar person, he once became a specialist of science based sources, or let's say कोई science से related चीज़ थी कि कुछ, और अगली बार वो he will be specialist on economy, next time he will be a political specialist. Okay. Then flack, so flack is discrediting things. ठीक है. And marginalizing dissent, so dissenting voices you start to marginalize them. So इसके बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो भी बात कर रहे हैं ना. अच्छा, ये दूसरी किताब भी थी इनकी, पहले इसके बारे में बात करते हैं. मीडिया कंट्रोल, द स्पेक्टिकुलर अचीवमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा. सो दिस इज रिटन आफ्टर और लाइक अराउंड दैट गल्फ वॉर. ठीक है. हाउ मीडिया हाउसेस दे क्रिएटेड अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ अ लाइक वॉर. A book by Noam Chomsky that was written after Gulf War. It explores how media is used to control the public through propaganda. So how a particular war is also justified by media. Okay, I hope this is making sense. Isn't this making a lot of sense? Are you guys not enjoying this? You should enjoy this. ठीक है. एक तरफ एग्जाम की टेंशन छोड़ के नई नई चीज़ें पढ़ रहे हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. देखो मैं जो भी आपको करा रहा हूँ, इस CUET PG 2023 ठीक है कि एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था, वहीं से मैंने सारी चीज़ें उठाई है. ठीक है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गोइंग थ्रू ऑल दीज पेपर्स, फाइंडिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, देन क्रिएटिंग ऑल दिस थिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. यू कैन नेवर थिंक अबाउट इट. मैं आपको बता रहा हूँ, सोच के देखना कितना मेहनत का काम है. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. सो हु रोट द बुक टाइटल मीडिया कंट्रोल, अ स्पेक्टिकुलर अचीवमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा? हु रोट दिस बुक? दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. Give me the answer. Now you know it. Very good, Kanishka. Noam Chomsky was actually a linguist as well as a critique of media. So you read about him, vast, and a very diverse amount of work. So please go through his Wikipedia profile as well. Okay, very good. So this was a PYQ of CUET PG. And UGC net people will say, sir, why are we learning about him? अरे देखो भाई, who co-authored manufacturing consent with Noam Chomsky? This was asked in one of the set exam. ठीक है, बताओ. Very good, Bidhan. So who co-authored manufacturing consent with Noam Chomsky? बताओ. क्वेश्चन पूछा गया है, आप पढ़ के जाओगे फिर भी नहीं करोगे. मतलब जो एग्जाम में पूछ चुके हैं वो तो कर लो अच्छे से. हम उतना ही कर ले, बहुत है यार. बाकी हमें क्या पता क्या पूछेगा. ये सारे PYQs है बच्चों. गुड. देखो इससे भी कंफ्यूज करा ना एग्जामिनर ने. बरने की कौन सी किताब थी? देखो इन सारे, अच्छा इनकी किताबों के नाम बताओ मुझे. ये एडवर्ड एस हरमन साहब के साथ इन्होंने लिखी थी, नॉम चॉम्स्की ने, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट. और इनके जो 5 फिल्टर्स हैं उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फिल्टर ऑफ नॉम चॉम्स्कीज मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, और बुक्स लाइक दिस दे कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस लाइक दिस. ठीक है. तो अब देखो इतना सारा पढ़ा है, इसको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है. कितने बच्चों ने मुझे बताओ अच्छे से पुरानी क्लासेस को रिवाइज किया है, कि ऐसे ही उठ के आ जाते हैं रोज? रिवाइज करके आया करो भाई जो भी पढ़ते हो. ठीक है. मैं टाइम लग रहा है, लगने दो, पर कोई बात नहीं, आप इससे ज़रूर नंबर मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. एडवर्ड एस हरमन. अच्छा इन सब की नाम बताइए मुझे. एडवर्ड एस बर्नी की कौन सी किताब थी? ही इज एक्चुअली कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस एज वेल. वेरी गुड. इंजीनियरिंग कॉन्सेंट. ओके गुड अंकित. ईयर भी बताते चलो. 19 कौन सा, 23 या 22? वॉल्टर लिपमैन की किताब बताओ. वेरी गुड. मनमोहन. ईयर्स भी बताओ. द बायस ऑफ कम्युनिकेशन बाय हैरल्ड इनिस. अब इससे और क्वेश्चंस बनते हैं. देखो इसको पोस्टमार्टम करते हैं. 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, टाइम बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड मीडिया, बायस्ड मीडिया.
बायस ऑफ कम्युनिकेशन, हैरल्ड इनिस, ठीक है। इनकी एक और बहुत लैंडमार्क किताब जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, एम्पायर इन कम्युनिकेशंस, ये एक हिस्ट्री बताते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशंस पे जिसका कंट्रोल था और एम्पायर्स के बारे में, ठीक है। वेरी गुड। एडवर्ड एस बर्नी की कौन सी किताब थी? क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन 1923, ओके। पब्लिक ओपिनियन केम इन वॉल्टर लिपमन्स 1922। वेरी गुड। देखो आप सबको, बच्चों को सब कुछ आता है, क्या परेशानी क्या है? इसी तरह से रिवाइज करना। यू गाइस नो एवरीथिंग बच्चे, ठीक है। बस जस्ट फील कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, कीप लर्निंग अबाउट थिंग्स, ठीक है, कीप फाइंडिंग थिंग्स, ठीक है। वेरी गुड। देखो आप सबको सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे कल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैनुअल कासल के बारे में, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब एक और क्लास होगी, इसमें निपटा देंगे, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ूंगा ना तो दिक्कत है, आप लोग कुछ भी रिटेन नहीं कर पाओगे। आज जो पढ़ा था इसको पढ़ लो, ठीक है। बहुत कुछ कर लिया आज भी हमने, और जो एक ऑथर है उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ के आओ, इससे आपकी थ्योरीज भी रिवाइज होगी। जो बच्चे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कह रहे हो, हु कॉइंड दिस, वो इसी के अंदर तो आ रहा है। अभी हम जब बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किसने दिया, टाइम बाइज मीडिया किसका कॉन्सेप्ट है, वो उसी तरह तो रिवाइज हो रहा है, ठीक है। बस कुछ ही रह गए हैं। यस, अभी 90s तक पहुंच गए हैं, अगली क्लास में हम 2000 तक पहुंच जाएंगे। और कभी बाद में टाइम मिलेगा ना तो एक और क्लास रखूंगा। सो वी लेफ्ट सर्टेन बुक्स विच डिडंट फॉल इन दिस chronology, like certain books of critical theories, ठीक है, dialectics of enlightenment, or let's say a book called the work of art in mechanical age by Walter Benjamin. It is very important book, ठीक है। तो जो इस chronology में नहीं पढ़ी, कभी मैं एक क्लास अलग से रख दूंगा, ठीक है। सो that was all. Keep learning, ठीक है, go through our lectures, everything is open access for all of you. You won't be needing anything else. I can say this for media aptitude at least, ठीक है। For your current affairs, keep learning. You have to read newspaper, you can go through certain websites like GK Today, all those things. Some of you, okay, you asked me, said to create a test series. I have already created it, and another test is live, which is this media literature. So for CUET PG students, I have removed 25 questions which are not relevant for you. So there were some questions from research based things. Your test is live on this thing also. There are 30 full length mock tests also, which has all the current affairs as well. So you can, there will be a folder called foundational and important topics. उसमें जाके आप देख लेना, जो है उस पर कर सकते हैं, ठीक है। For UGC NET students, there will be 100 questions which will be live tomorrow. For CUET PG students, it's live and it's with along with all the solutions as well, ठीक है। So if you found this lecture helpful, you can like this video, okay, and if you have any doubt you can write to me in the comment box. I'll try to reply there, okay. And I'll also upload this PDF once we complete this entire thing, okay. Then two things that learning, okay, studies your, yes, I'll bring that one also, okay Ansh, okay. So if you like this video, the algorithm of YouTube gets to know about us also, okay. Take care sir, PYQ में जा आप, you can go in application as well as website also, ठीक है। So the links will be all in description box, Kanishka, ठीक है। Take care, bye bye.